Welcome back to Raploop. I'm Sati Nair, and today we are celebrating the auspicious beginning of the festive season with Shubharam to the diamond and jewelry purchases. And today we are thrilled to have two dynamic industry leaders with us. Our guest today is a visionary leader of the Indian jewelry industry, Mr. Ashish Pete, a partner at Vaman Hari Pete Jewelers. Thank you so much for having me here. And congratulations, firstly, for starting this Loop series of podcasts. I think it's an excellent initiative and wish you all the best. Another dynamic leader who has played a very important role in transforming Kisna diamond and gold jewelry into one of India's fastest growing jewelry brands, Mr. Parag Shah, CEO of Kisna Diamond and Gold Jewelry. Welcome to Raploop, Mr. Parag Shah. Thank you very much for inviting and giving a chance to share the insight of what we have done over the time. So thank you. So Ashish, we are talking about Shubharam today. And it got me thinking, every legacy has its own story and its own beginning. Right. Can you take us back to the historical flashback of how Vaman Hari Pete has started his business and how was the jewelry retail business back then? The moment I start thinking about our initial years of the company, I get goosebumps because the company was founded by my grandfather, Ganesh Hari Pete and Vaman Hari Pete in 1909. It's 115 years back. And they came from a small town that time, Igatpuri and Nasik, and they came to Bombay and they wanted to start something on their own. They were not happy just doing the studies. So one astrologer told them, you do something in white. So they were wondering what to do in white, whether to do in pearls or silk. That time silk was a big thing. But they decided to do in real pearls, and that's where the initial business started. And interestingly, they were known as moti wale pethe, मतलब मोती में deal करने वाले पेठे. So that's how it started. And slowly they started adapting to as the customer trends changed. They started dealing in gold, then diamond. Incidentally, we are one of the oldest people to deal in diamonds in Maharashtra and Mumbai. And then silver. So we became a one-stop shop. And around 1960, when people were just setting up, we had our first expansion or first branching out. And since then, now I am the third generation, and we also have the fifth generation involved in the business. And currently, we have 30 stores in 3 states. So that has been the journey. And to Parag Bhai, Kisna's story is also from its early days to becoming a household name. And it's truly inspiring. Could you please take us to the story with us? In 2004 when we planned out and हमने research किया था, मतलब diamond की ज़रूरत है लेकिन diamond इतने पहुँच नहीं पा रहे. It's not reaching to the people, and that's how the story started. And the journey was really so difficult because way back in 2005 जब हमने launch किया था तब बात करते थे diamond की तो बहुत सारे challenges आते थे. और हमने डायमंड बिकॉज वी कम फ्रॉम द हरे कृष्ण ग्रुप सो राइट फ्रॉम द डे वन वी वांटेड कि भाई वेरी ट्रांसपेरेंट वेरी क्लीन ब्रांड खड़ी करनी होती है. हमने भी स्टडी किया था कि हाउ डज द ब्रांड सस्टेन एंड हाउ डज इट ग्रो. तो दैट वाज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि इट हैज़ टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट क्लीन एंड अप्रोचेबल. तो वी आर द फर्स्ट टू स्टार्ट द जर्नी with the B2B because we wanted to reach to the consumer. कंज्यूमर के पास जाने के बीच में हमारे पास रिटेलर थे जब हमने शुरू किया था डिस्ट्रीब्यूशन में. तो रिटेलर को क्रैक करना बहुत मुश्किल था उस टाइम में. और वो जर्नी की बात करें तो बिकॉज वी वांट टू गो फॉर द लॉन्ग, तो हमने हमारी जो स्ट्रैटेजी बिठाई थी वो ऐसी थी कि भाई एडवांस पेमेंट. और उस ज़माने में एडवांस चलता नहीं था. लोग टर्म्स देते थे, कंसाइनमेंट देते थे, माल रखो बेच के पैसे देना. और हम नए थे, छोटे थे, और दुकान में जाके जब बोले कि एडवांस दो तो लोग खड़े नहीं रखते थे. तो पहले जो 50 दुकान हुई तो, और जब शुरू किया तो ऐसा लगा 50 दुकान हो जाएगा तो बस हो गया. लेकिन करते करते 1-1.5 साल में जब पहली 50 दुकान हुई तो ऐसा लगा अरे ये तो कुछ नहीं है. जब शुरू किया था तो लगा कि 50 दुकान में हो जाएगा तो बस काम हो गया. लेकिन 50 जब हुई तभी तो रियल एक्साइटमेंट शुरू हुई, क्योंकि तब तक तो लर्निंग फेज़ था, एक्सपीरिमेंटल फेज़ था, बहुत सारी चीज़ें थी. तो वहाँ से जो हमारी फेज़ शुरू हुई और बहुत सारी चीज़
कृष्णा ने पहले शुरू की थी, वो आज जब सुनते हैं देखते हैं तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि आज जब तकरीबन 1500 प्लस दुकानों में कृष्णा जो अवेलेबल है, और इंडिया में डायमंड स्टडेड ज्वेलरी या तो वर्ल्ड में डायमंड स्टडेड ज्वेलरी अगर एक ब्रांड की हो 1500 जगह पे तो कोई नहीं है. सो इट्स रियली क्रिएटिंग अ हिस्ट्री. इंस्पायरिंग एक्चुअली. 2005 में तो कोई आपको क्रेडिट के बिना को तो लेगा ही नहीं है. वो टाइम पे आपने एडवांस में किया, सो इट्स एंड दैट टू सेलिंग डायमंड्स. that's to sell in diamonds when there was the acceptance of diamonds was very less that point of time, but Kisna has break that challenge actually. And Ashish ji, what are the most pressing challenges you see retailers facing in today's market? And even though we have challenges, we always say that challenges brings a lot of opportunities also, and especially in terms of diamond sales and promotions. What are the main opportunities? Last few years, the whole, I would say, scenario of the gem and jewelry industry in India has dramatically changed. Since mandatory hallmarking has come in, a lot of people have become more professional, and the organized industry part is slowly growing, and now the speed of growth has increased. Now we have I can say 38 to 40% of the Indian gem and jewelry market formalized. So for any small or medium sized jeweler, it's a challenge, because now suddenly he's faced with a challenge from organized players, retail giants who are in their neighborhoods. So competing with them is a big challenge, number one. Number two, to manage the whole picture in such a rising gold price trend is a major challenge that most of the jewelers are facing. And I would say most important is to get the next generation of your family involved in the business. Because as a chairman, when I was moving around across India and meeting most of the jewelers, तो उनका यही रोना था कि सर हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इंटरेस्टेड नहीं है, दे डोंट वांट टू जॉइन द बिजनेस. वो बोलते यहाँ पे आके वही आपका पुराना कैसे करेंगे. सो द चैलेंज नाउ इज़ टू गिव देम अ बिजनेस इन सच अ स्ट्रक्चर्ड मैनर कि उनको भी अच्छा लगे, प्राउड लगे कि यस मैं ज्वेलरी बिजनेस करूँगा. ये जेनेरिक 3 चैलेंजेस दैट आई सी. तो ये 2-3 चीज़ें मैनेज करके व्हाट पीपल हैव टू डू इज़, वो सिर्फ प्राइस राइज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बट ज्वेलरी एज अ थिंग दैट यू एड ऑन विथ, और उसका आर्टिस्टिक वैल्यू उसको प्रमोट करके अगर ज्वेलरी करेंगे तो आई थिंक वी हैव अ गुड फ्यूचर. So let's talk about Kisna's ambitious growth and expansion plan. द विजन ऑफ द ब्रांड इज़ हर घर कृष्णा. तो जब हमने शुरू किया तब से, एंड सम हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग एंड फॉलोइंग इन प्लेस, की जैसे अभी बताया कि लाइट वेट ज्वेलरी. सिंस डे 1 कृष्णा इज़ अ लाइट वेट ज्वेलरी. एंड जो हमारा मेरा पर्सनल भी और ग्रुप का भी एक एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल मार्केट का, एंड वी आर सीइंग द सेम ट्रेंड कमिंग इन. So we've been exporting to major countries and especially to US for a long time, and personally involved into that. So we have got the learning, and that what we translated to the India. तो सबसे बहुत क्लियर है कि हर घर कृष्णा, एंड अगेन विद द डेली वेयर ज्वेलरी. हम बोलते ही हैं कृष्णा इज़ नॉट अ लॉकर ज्वेलरी, इट्स अ ड्रॉर ज्वेलरी. जब से छोटे थे तब से सुना था कि पहले जैसा भी नहीं है. आज भी सुनते आए कि भाई कंपटीशन है, एंड इट्स वे बैक इन 80s व्हेन माय फादर यूज्ड टू डू बिजनेस. हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन वो जो अंकल और फादर बात करते थे तब वो चैलेंजेस की बात करते थे, तब तो समझ में नहीं आता था, लेकिन आज रिलेट कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है. तो चैलेंजेस है, लेकिन जो चैलेंजेस को हम लोग ने कैसे ओवरकम किया, बिकॉज है तो सबसे बड़ा था कि हमको डायमंड बेचना था. तो डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्या है, तो कस्टमर को नज़र रखते हुए उनका सबसे बड़ा है, जैसे अभी बोला कि गोल्ड कभी भी बुरे वक्त में काम सकता है, कैश हो सकते हैं. एक गोल्ड की द बेस्ट थिंग ऑफ द गोल्ड इज राइट. सो वी बॉट द सेम इनटू डायमंड. तो कृष्णा की जो आज पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है. 90% बायबैक एट द करंट प्राइस, नथिंग हिडन चार्ज, कुछ नहीं. आज का जो भाव है वो भाव से 10% काट के लेके जाओ, या तो 95% एक्सचेंज, तो 5% में एक्सचेंज कर सकते हैं. फैशन आउट हो गया. तो जो कस्टमर सेंट्रिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, वी आर वेरी फोकस्ड ऑन कस्टमर. जब बात कर रहे हैं इट एज यू मेंशन आर्टिस्टिक, सो इट इज़ ऑल अबाउट द डिज़ाइन एंड कंज्यूमर नीड. तो कंज्यूमर की आज की नीड है डिफरेंट फंक्शंस. पहले हुआ करता था शादी ब्याह में ही पहनते थे, लेकिन आज तो हर एक ओकेशन के लिए आपको चाहिए. और जिस हिसाब से इंडिया ओपन अप हो रहा है, ऑल द आई थिंक
It was a time when even 4 to 5% of the female used to work, but now you see it has moved to 30%. आज 30% वुमेन्स है जो काम कर रही है. तो जब वो जा रहे हैं तो उनको डेली नीड्स है. Ashishi, what are some timeless strategies that retailers can apply during this Shubharam season? Yes, it's a Shubharam. Hindu Navavarsh has just begun, so Shubharam hai. Because almost 80 to 90% of the jewelers that we have are family jewelers or family based jewelers. So उसमें when you're working in a joint family or in a combined family, he will also agree. So managing the family is very critical in the business. और उसके लिए एक मंत्र है मेरे पास, that when you are working with the family members, forget the negatives of your family members and only focus on the positives of them. Then everything will come together in a crescendo और business बढ़ जाता है. That's when you work together. और from the business point of view, I think तुम्हें अगले साल या 5 साल के बाद आपका बिजनेस कौन सी स्टेज पे होगा, वो विजन आपको नए साल में रखना चाहिए. सो पोजिशनिंग इज़ नॉट इन योर प्रोडक्ट, नॉट इन योर माइंड, बट इट इज़ इन द योर कंज्यूमर्स माइंड. उनके मन में आपके ब्रांड का क्या पोजीशन है, वो क्या सोचते हैं और क्यों आपका माल खरीदते हैं, वो जब तक आप नहीं समझोगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगा. So Parag bhai, Kishna has managed to penetrate both urban and rural market very effectively. And what is the key insight you have gained about the Indian diamond industry? जब हम मेट्रोज में गए, अर्बन में गए, तो पहले से ही डायमंड अवेलेबल था रिटेलर्स के पास. सो दे नेवर एक्सेप्टेड अस इनिशियली एंड दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस. तो व्हाट वी डिड या तो इट वाज अ प्रोसेस होते गया. व्हेन वी मूव्ड आउट ऑफ द मेट्रोज अर्बन एंड व्हेन वी मूव टू 2 टायर 3 टायर, वी आर मोर एक्सेप्टेड. बिकॉज क्या था, वहाँ पे डायमंड थे ही नहीं. एस्पिरेशन तो था लेकिन डायमंड नहीं थे. विद द चेंज ऑफ टाइम व्हाट हैपन इज कि सडनली द रिवोल्यूशन ऑफ internet, social media, you can see last 10 years of social media has changed a lot. That has helped again the Krishna to boost his growth trajectory. तो क्या हो गया कि आज कोई डिफरेंस नहीं है. Only 3% of the Indian population has got the diamonds, केवल 3%. So 97% of the growing class, because India is not, we cannot say poor, भले हम जो भी बोले, that's a different, but people has an aspiration and affordability कि कर रहे. So अब इनकी जो थी, तो we had a very good response of Krishna into tier 2, tier 3 cities, because only the penetration is 3% and the aspiration is very high. So we see market everywhere and we are getting that benefit out of it. That learning has helped us. Ashish, given the evolution of the retail technology, what are the most effective ways of retailers to use Rapnet to drive the growth? Right. Technology has become one of the biggest and most important pillars of any business in India. Because without technological involvement in the business, आप scale नहीं कर सकते और business को एक level का बना नहीं सकते. Rapnet has been a revolutionary product itself, and Rapaport has been on the forefront of giving information to the trade about diamonds and what is happening, I mean, for many years now. But Rapnet has done one thing, it has democratized the trade. पहले क्या था, only a few brokers had access to all the manufacturers, so it was all dependent on an intermediary. But now it has become democratized, I would say, where the retailers can get the best kind of goods at a click of a button और direct deal कर सकते हैं. Exactly, because I think ये जो COVID-19 के बाद technology has took a I think 2 steps up. Yeah. Because सबका लाइफ में टेक्नोलॉजी बहुत चेंजेस कर दिया. And those who adapt with this technology, they move much faster, they see much faster growth. So Rapnet was always like giving a platform for everybody. You sit in any part of the India, any part of the world, you can buy from plenty of manufacturers are available. Parag ji, what role do branding and storytelling play in making diamond jewelry appealing to the younger consumers? See, everybody loves the story and want to, when they wear a diamond, they want to share a story कि भाई कहाँ से लिया था, कैसे लिया था, what is after it. Maybe a small piece of jewelry or a big, because that's why the people, especially women, wears the jewelry कि भाई पहना है
उसका अटेंशन होता है, कोई ना कोई तो पूछे भाई कहाँ से लिया था, यू नो, दैट्स हाउ इट इज़. सो डायमंड की स्टोरी की जब हम बात करते हैं तो ईच एंड एवरी डिज़ाइन दैट वेयर वी एज ए रिटेलर प्लेज अ रोल, भले हमको लग रहा है, लेकिन अगर जो भी कंज्यूमर आता है, एंड दैट्स द चैलेंज वी आर फेसिंग, एंड डेफिनेटली आशीष भाई भी बोलेंगे, जो हमारी टीम है, इन हाउस सेल्स टीम होती है, उनको जो ग्रूम करके कि भाई इसकी एस्थेटिक क्या है, कैसे है, वो जब हम बताते हैं, और डेफिनेटली वो होता है क्योंकि हर एक फीमेल को कहीं ना कहीं उसकी ज्वेलरी की स्टोरी बोलनी है. दैट स्टोरी इज ऑलवेज हैपन्स, एंड व्हेन इट कम्स टू लेट्स से द रिटेल साइड टू रीच द कंज्यूमर, it is very important because diamond and jewelry is always an emotional product. I think I'll like to come in. Because in this competitive age, जो मैंने बोला outside उसमें, so it's that story that will differentiate your brand from other brand. What you are selling is the same product maybe with everything else. But your story is what is the differentiating factor and why a consumer will choose your store against someone else's store. That's very important. And like you said, you know, I also have a jewelry from my father gave it to me 25 years before during my marriage, and I still kept it like that. I said, no, it's my memory actually. And I always say that this piece actually my father and me went to the jewelry store. I bought it from there. So I am not going to change this. And Ashiji, we hear a lot about trust being the cornerstone of retail jewelry. And what strategies have helped Vaman Haripete build and sustain trust over generation? So interestingly, as the technology has progressed, now we had cadmium jewelry and now we have hallmark jewelry. But all those years back, there was nothing like this. So what people used to do, that whatever they are selling, when the customer brings back the jeweler used to cut 10-15% in wastage and buy back their own jewelry. But we were saying that yes, we have sold it at a particular caratage. It is our duty to buy it back at the full weight and full value. And we don't say that you trust us, you trust us. It's small things that you do for the consumer, you know, that builds the trust. You know, this moti kudi banta tha. So long time back, my grandfather had made, because at that time he used to make it himself. So he had built that unique real pearl moti kudi and had sold it to some one of the big business person, I won't name him now. And there was a robbery at his place. And unfortunately, the robber came to our store only to sell that kudi. But my grandfather realized that because he had himself, banna bolte na, so he had done it himself. He said, ruko, and he went inside and called the police. And called that person, आपका जो कुड़ी खोया था मेरे को बेचने को आया है, आप आइए. So if something like this happens, customer का trust कहाँ से कहाँ जाएगा? To hold somebody, you know, to like that, it's a very interesting story actually, and it's a real story, you know. And I didn't know that. The customer's son told me. Incident. To our listeners, we hope you find this episode helpful as you navigate through the Shubharam festive season. Don't forget to subscribe to Raploop for more experts insight. Until we meet next time, signing off.